नमस्कार, मैं आशीष राजपूत। नमस्कार, मैं डॉक्टर ओमकार कुलकर्णी। आशीष जी, मुझे एक सवाल है। जब भी हम लोग मार्केट से कोई पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स या फिर होम केयर के प्रोडक्ट्स लाते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों ने देखना ज़रूरी होता है, और वो ना देखें तो किस तरह से आपत्ति होने की संभावना होती है? डॉक्टर, मैं आपको बताऊं कि बहुत बार जो कंज्यूमर है अनजान होता है और वो बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज करके सिर्फ पैकिंग और उसके प्राइस को देख के प्रोडक्ट खरीद के ले आता है। उस वजह से बहुत बार ऐसे हो जाता है कि उसको स्किन इरिटेशन, स्किन रिएक्शन या चेहरे पे पिंपल्स बढ़ जाना एकदम से, ये सारी प्रॉब्लम्स को फिर कुछ दिनों बाद फेस करता है या इमीडिएटली फेस करता है। तो आपका मतलब है कि ये सभी जो प्रोडक्ट्स हैं उनका सेफ्टी देखना ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी। तो ये सेफ्टी इंश्योर करने के लिए कंपनीज के पास कोई मेथड होती है क्या? किस तरह से वो ये इंश्योर करती है कि उनके जो प्रोडक्ट्स मार्केट में जा रहे हैं वो सेफ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डॉक्टर, आपने यहाँ पे सवाल ये किया है। नॉर्मली ऐसे होता है कि जो भी प्रोडक्ट जब मार्केट में जाता है तो पहले वो फैक्ट्री के अंदर ही क्वालिटी स्टडीज से गुजरता है और उसके बाद एज पर द BIS स्टैंडर्ड एक सेफ्टी स्टडी यहाँ पे हम लोगों को कैरी करना पड़ता है प्रोडक्ट का, जिसमें पैच टेस्ट आता है और प्रोडक्ट हाइपो एलर्जिकली टेस्टेड है या नहीं है, ये हम लोगों को टेस्ट करना पड़ता है। तो जैसे आपने बोला कि हर प्रोडक्ट जो होता है वो इंटरनली क्वालिटी कंट्रोल, इंटरनली टेस्टेड रहता है जी। तो वैसे ही ये जो सभी सेफ्टी स्टडीज है वो भी कंपनीज अपने आप में यानी इंटरनली ये टेस्ट करवाते हैं या ये काम कोई स्पेशलाइज एजेंसी करवाती है? डॉक्टर, इसमें हम लोग दोनों तरीके से, मतलब दोनों वे से जा सकते हैं। इंटरनल भी हम लोग ये सारे स्टडीज कर सकते हैं, प्लस इंडिया में बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो स्पेशली ये सेफ्टी स्टडी करती है। उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ में टाई अप करने का ये हम लोगों को फायदा होता है कि एक तो टेस्ट हम लोग हमारे इंटरनल फैक्ट्री में भी करते हैं, लेकिन जो हमारा कस्टमर है उसको और ज्यादा क्वालिटी प्रॉपर मिले और उसका विश्वास हमारे ऊपर ज्यादा बने। इसलिए नॉर्मली हम लोग ऐसे करते हैं और दुनिया की सारी बड़ी कंपनीज यही करती है कि वो थर्ड पार्टीज के साथ में टाई अप करके अपने प्रोडक्ट का सेफ्टी स्टडी करवाती है और अगर वो वहां पे पास होता है तो ही वो प्रोडक्ट को मार्केट में डालती है। तो एक प्रकार से अनबायस्ड क्वालिटी रिजल्ट्स देने के लिए ये टेस्ट बाहर की एजेंसी से करवाया स्पेशलाइज्ड, हाँ जी, तो ज्यादा फायदेमंद हाँ रहेगा। जी, हाँ जी। आशीष जी, आपने जो अभी प्रोडक्ट्स के बारे में बोला तो उनके जो भी सेफ्टी स्टडीज करवाए तो उनके बारे में थोड़ा सा हम लोगों को बताएंगे क्या? डॉक्टर, पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो भी हमारे प्रोडक्ट्स है जो मार्केट में अभी है वो ऑलरेडी हमारे इंटरनल लैब्स के थ्रू क्लिनिकल स्टडीज को पास होके ही मार्केट में गए हैं, लेकिन हमारे जो कंज्यूमर्स है उनका विश्वास हमारे ऊपर ऐसा ही बना रहे, इसलिए हम लोगों ने इस साल अलग अलग क्लिनिकल ट्रायल एजेंसीज के साथ में टाई अप करना शुरू किया है। बैंगलोर की एक क्लिनिकल ट्रायल एजेंसी है जहाँ पे हम लोगों ने हमारे हब्सन और क्लीनर इन प्रोडक्ट्स का सेफ्टी स्टडीज करवाया है। तो मैं चाहूंगा कि इन सेफ्टी स्टडीज के बारे में मैं आपको बताऊं। हम चलते हैं उनकी तरफ जो इन सेफ्टी स्टडीज को जिन्होंने कंडक्ट किया है, जिनका नाम है डॉक्टर प्रभु, जो तिरुमला हेल्थ केयर के डायरेक्टर हैं और इनका बहुत सारा एक्सपीरियंस सेफ्टी स्टडीज में ही रहा है। Hi, myself Dr. Sunil Prabhu. I am the consultant dermatologist and aesthetic physician at Tirumala Healthcare Center. This center has been exclusively developed as a center for testing of various pharmaceutical and FMCG products, consumer care products, and some of the tests that we do here actually help organizations to build up a safety and efficacy profile of their products, which they can market later through various channels throughout the world and India. When it comes to the safety of the consumer care products, especially a cosmetic product, a large number of products are there in the market, which some of them which are not tested at all on humans, and this can actually give rise to serious allergic reactions and various other dermatological problems, which can be circumvented when we do this basic safety test. The first basic safety test is called as the patch test, and it involves application of the product onto the skin for about 24 to 48 hours, post which there is an observation for 2 to 3 days and at the end of 7 days. This particular test actually helps us to use the product
and to get the claim dermatologically tested. And this is one of the primary basic tests that are required as far as the product safety is concerned. The second test is also performed on some of the products. It is called as the repeat insert patch test. Now, this particular test actually involves repeated applications of the cosmetic onto skin and helping the skin to cope up with that. Now, what happens during this process is you tend to induce people to develop an allergy in people who do not have it in the previous applications or by the use of earlier cosmetic products. Once you apply this for about, the process includes an application for about 3 weeks, after which there is a 2-week gap, and then we again re-challenge the skin to the product that is in question. And if this test actually comes as a negative, it actually adds a second additional point to the safety of the product, which we can call as hypoallergenic. So this term is now widely used in many of the cosmetic products, and the intention has been to conduct all of the products that we are testing here for both the dermatologically tested as well as hypoallergenic claims for all the products that are in question. Some of the products that we tested was for Netsurf, and this included some personal care products and home care products, as you see here. The personal care products were tested for the basic patch test, and the home care products were also tested for patch test, and all the products of personal care were tested for repeat insert patch test, which is the second test in the safety parameter. And a couple of products in the home care products were also tested for RIPT. To summarize, using international guidelines, these products were all tested for the basic patch test. These patch tests done on these Netsurf products proved out to be negative, which importantly informs us that the products are non-irritant in nature and can be safely used by all subjects in their day-to-day life. It was also tested on another parameter called as repeat insert patch test, and since they have come negative on that parameter also, the products can be then labeled as hypoallergenic, which means there is a less tendency of developing allergy during the use of these products.